While choosing college, many students have no idea of what they're actually doing. And if you are one of those students जो अभी अपना engineering college choose करने वाला है, this video is for you. I'll be going over just 5 simple mistakes which you can avoid to ensure that you get the right choice of college for yourself. So coming to the first point is placements. बहुत लोगों को लगता है कि बस प्लेसमेंट्स का डेटा देख लिया तो काम हो गया, कहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है वो देख लो और मैं वो कॉलेज और वो ब्रांच ले लूंगा. सो दैट इज अटरली द रॉन्ग अप्रोच. इससे गलत मिस्टेक आप कर नहीं सकते हो पूरे प्रोसेस में. तो सही से करना क्या है? स्टार्ट लुकिंग एट मीडियन एंड एवरेज पैकेजेस एज वेल, फर्स्टली ऑफ द कॉलेज एंड देन ऑल्सो ऑफ द ब्रांच सेपरेटली. ये करना स्टार्ट करें एंड यू ऑलरेडी स्टार्ट सीइंग कि ऑल कॉलेजेस आर नॉट द बेस्ट फॉर यू. देन द सेकंड पॉइंट इज सीइंग द फ्यूचर स्कोप. लुक एट द कॉलेज, लुक एट वेयर द एलुमनाई आर. जिन्होंने पहले वहां से पढ़ा है वो अब क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो देखो. एंड ऑल्सो लुक एट व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर देयर स्पेसिफिक टू योर ब्रांच. द स्टूडेंट्स जिन्होंने आपका ब्रांच लिया है वो अभी क्या कर रहे हैं, व्हाट फील्ड हैव दे वेंट इन. अगर कंप्यूटर साइंस लिया था तो आर दे डूइंग समथिंग सॉफ्टवेयर रिलेटेड या फिर वो एकदम नॉन टेक करे. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट फील्ड दे आर इन, व्हाट कंपनीज दे आर in. So start looking at that data. Not all of it is easily available, but still you need to make an effort before you make the final choice. हर कॉलेज का नहीं देखोगे तो चलेगा, बट इफ यू हैव डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्रांच एंड कॉलेज, स्टार्ट लुकिंग इनटू दैट स्पेसिफिक ब्रांच. देन थर्ड पॉइंट इज द फॉल्स हाइप ऑफ ब्रांचेस. बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सी ब्रांच अच्छी है, कौन सी ब्रांच बुरी है. बस सब बोलते हैं कि CSE अच्छी ब्रांच है, उधर प्लेसमेंट्स अच्छी है तो सब ले लेते हैं. But I assure you that many students who take CSE वो बहुत struggle करते हैं for the coming 3 to 4 years because they were not aware कि उनको समझ आ रही है कि नहीं, उनको उसमें actually interest है कि नहीं, and will they be able to cope up with it or not. तो CSE और any other branch पहले ठीक से समझो what actually is being taught in that branch, क्या पढ़ा रहा है एंड क्या वो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, क्या पढ़ पाओगे कि नहीं. Analyze this very carefully for any branch, not just CSE, even mechanical, metallurgy, any branch you are considering. Look into it very carefully. Then the fourth mistake, which almost everyone does, more than 95% of students will be doing this mistake, that they do not talk to the seniors. So this is a very simple thing which you can do, which will definitely help you even now. This is a very simple thing which you can do, which will put you miles ahead of others and also make sure that तुम मिस्टेक नहीं कर रहे हो इतने इंपॉर्टेंट टाइम. जस्ट टॉक टू समवन who has been in that exact spot. कोई ऐसे सीनियर से बात करो जो उस कॉलेज में उस ब्रांच से पढ़ चुका है या पढ़ रहा है recently. Recent graduates are the best. And to help the students with this, we are also helping you connect with these students at a very minimal price. Just be careful that you are paying such a large amount of fees, especially in private colleges. So just for ₹500, we are helping you connect in a one-to-one meet with these students. You can connect with these students in a personal meet and इनको आप कुछ भी questions पूछ सकते हो related to that branch, so that you see not just the good side but also the bad side before taking any branch. Because every coin has two sides. एंड हम लोग बस अच्छे साइड पे फोकस करते रहते हैं. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सेसिबिलिटी. You need to see where the college is located. Do you want to stay near to your home or are you okay with going far? And what other amenities are there? उधर hostels कैसे है? उधर food facilities कैसी है? Are you able to travel easily out and in of the campus? All of these simple things are very important for long term like 4 years. So it is important that you check out these important features as well. कि connectivity कैसी है? How do you get to and from college? And also food and other services like Amazon, Blinkit, those as well. And at the end, if you are really confused between two branches, then we have made a very simple tool for you where you can just put any 2 branches from any 2 engineering colleges and you can just see कि okay, what branch is actually the right one for you. You can also ask a simple question of your choice there, and using 10 different AI models, it will tell you that which branch is better than the other and why. There is no unique answer, but it will tell you that okay, in terms of placement, college A and branch A might be better than college B and branch B. If you have any more question for any college or any branch, you can just put it in the comment section. I'll try my best to help you out, and stay subscribed to the channel and we'll be coming up with more and more helpful content for you.